students, a very big and warm welcome to all of you. I hope you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter, which is conservation of biodiversity. A great variety of plants and animals exist on the earth. They are essential for the well-being and survival of mankind. The biosphere is the zone of earth which is inhabited by life forms including plants, animals and microorganisms. In order to survive, these life forms interact amongst themselves and with their non-living natural surroundings, which include air, water and soil. The living and non-living components of an area together constitute an ecosystem. An ecosystem is inhabited by a wide variety of plant and animal species. The existence of human being is at stake. Without these living organisms, it is very necessary to know the importance of plants and animals in our lives. तो हमारे आसपास सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें आप देखते हो वो हमारा इकोसिस्टम बनाती है. इसमें आपके प्लांट्स भी इंक्लूडेड हैं, एनिमल्स भी इंक्लूडेड हैं और ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूडेड हैं. तो ये आपस में क्या है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं. अब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की. अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर estimated to be found on the earth. Biodiversity also include their interrelationship and their relationship with the environment. It includes all the species of plants, animals and microorganisms. All these components are equally important to each other and to the environment. Biodiversity has arisen because of the varied climatic zones. The climate determines the type of plants and animals that survive and flourish in a particular region. Biodiversity is the natural wealth of the earth. It helps to maintain a balance in the environment. तो बायोडाइवर्सिटी आपको हर जगह देखने को मिलती है क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के प्लांट्स की स्पीसीज होती हैं, एनिमल्स की स्पीसीज होती हैं जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं और ये हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस रखने में भी हेल्प करती हैं. Animals directly or indirectly depends on plants for food, whereas plants depend on animals for pollination, seed dispersal and also nutrition. Dead remains of plants and animals are decomposed by microbes. This decomposition releases nutrients into the soil which are used by plants for their growth and development. Such interaction among organisms help to maintain the ecological balance. The part of the earth in which biodiversity exists or support life is called the biosphere. Living and non-living components of the environment together make an ecosystem. अब एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है. इसी तरीके से प्लांट्स भी जो है ये एनिमल पे डिपेंडेंट होते हैं उनके सीड डिस्पर्सल के लिए, पॉलिनेशन के लिए और न्यूट्रिशन के लिए. Flora and fauna, the plants found typically in a particular areas form the flora of that area. The term fauna represents the wildlife found in a particular area or geographical regions. The flora, fauna and other life forms like microorganisms are important renewable natural resources of a ecosystem. तो फ्लोरा एंड फोना की बात कर लेते हैं. फ्लोरा जो होता है ये एक पर्टिकुलर एरिया का आपका कितने के सारे जो ट्रीज होते हैं वो बनाते हैं. इसके अंदर आपके फोनाज आते हैं जो कि अलग अलग वाइल्ड लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं. इसके साथ आपने छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी देखे होंगे जो हमारे इकोसिस्टम को हेल्प करते हैं एक बैलेंस मेंटेन करने में. Now activity 1, with the help of internet prepare a list of flora and fauna found in your neighborhood park and write 3 characteristics of each in your notebook. अब आपको क्या करना है, एक्टिविटी करनी है. अपने नियर बाय पार्क में आप जा सकते हैं, वहाँ पे जा करके आपको अलग अलग तरीके के फ्लोरा एंड फोना के बारे में रिसर्चेस करनी है, ठीक है. आप उनके बारे में पता लगा सकते हैं, उनकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट से ले सकते हैं. फिर आपको एक नोटबुक तैयार करनी है, उसमें ये इन्फॉर्मेशन को लिखना है. Now endemic species, species of plants and animals which are found exclusively in a particular geographical area are called endemic species. These species are native to that region and they do not occur naturally in some other regions or habitat because they are only found in certain locations. They require special conservation efforts. If their habitat is destroyed, they will die and disappear altogether for
this world. A species may be endemic to a state, a country or a geographical zone. तो पहले हम बात करते हैं एंडेमिक स्पीसीज़ के बारे में। ये एक ऐसी स्पीसीज़ होती है जिसमें आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूड होते हैं और वो एक पर्टिकुलरली जोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं। ये जो स्पीसीज़ हैं ये नेटिव होती है उस रीजन की, मतलब यूँ कह लो कि उस रीजन की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उनके हिसाब से ही अपने आप को ढाल लेती है। फॉर एग्जाम्पल जायंट पांडा इज एंडेमिक टू द माउंटेन्स ऑफ साउथ ईस्ट चाइना। जैसे हम पांडा की बात करें, ये हर जगह नहीं मिलता, ये चाइना के कुछ स्पेशल माउंटेन्स में ही मिलता है क्योंकि ये ऐसी स्पीसीज है जो वहाँ के एनवायरनमेंट को ऑलरेडी ढाल चुकी है या अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट कर चुकी है। एशियाटिक लायन गिर नेशनल पार्क गुजरात, साइलेंट वैली इज एन एवरग्रीन tropical forest in Palakkad, Kerala. Valley of Flowers located in West Himalaya, Uttarakhand is known for variety of flora and mid-use of endemic alpine flowers. Nilgiri Tahar in Nilgiri Hills and lion-tailed macaque in southeast West India are some other examples of endemic species. तो इसके अंतर्गत आपके जितने भी प्लांट्स हैं वो भी आते हैं, जैसे कि कुछ फ्लावर वैली आपने देखी होगी हिमालयन रीजन्स में, उत्तराखंड के यहाँ पे जो प्लांट की स्पीसीज होती हैं, फ्लावर्स की जो स्पीसीज होती हैं वो दूसरी जगह पे नहीं पाई जाती। Now fact bites. Initially 25 biodiversity hotspots were identified, but subsequently 9 more have been added to the list, bringing the total number of biodiversity hotspot in the world to 34. India hosts 4 of the 34 biodiversity hotspots: the Himalaya, the Western Ghats, the Northeast and the Nicobar Islands can be found in India. तो इनिशियली जो बायोडाइवर्सिटी है उसके 25 स्पॉट्स जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं इंडिया में, लेकिन अभी रिसेंटली इसमें 34 जो हॉटस्पॉट्स हैं उनको भी ऐड किया गया है। Now loss of biodiversity. Various species of plants and animals have either become extinct or are on the verge of extinction. The loss of biodiversity poses a serious threat to the environment. There are many factors that cause harm to the Earth's biodiversity that include deforestation, pollution, climate changes, exploitation of natural resources as well as natural calamities. कुछ स्पीसीज एनिमल्स की ऐसी भी है जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है या फिर विलुप्त होने की कगार पे है। बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं इनके विलुप्त होने के पीछे। Extinct and endangered species. Species of plants and animals which have been lost forever are called extinct species. In other words, no more individuals of that species are alive anywhere in the world. For example, dinosaurs and dodo bird became extinct in the past. Among plants, calamities and lepidodendron have been extinct. तो कुछ स्पीसीज जो है प्लांट एनिमल की जो हमेशा के लिए विलुप्त हो चुकी हैं, जो कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज मानी जाती है, जैसे कि डायनासोर्स हैं, एक बर्ड है डूडो जो अब एक्सटिंक्ट हो चुका है और उनकी अब कोई भी प्रजाति इस दुनिया में नहीं रही है। स्पीसीज दैट face a high risk of extinction in the world are critically endangered species. Great Indian bustard is an example. These are species that are on the verge of extinction as they are decreasing in number due to killing and reduction of habitat. Species that are endangered or at risk, high risk of extinction are chikara deer, golden langurs and blood pheasants. Some more examples are Indian rhinoceros, Asiatic lions, crocodiles and blue whales. तो स्पीसीज जो हैं कुछ वो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पे हैं, जिनको हंटिंग वगैरह की वजह से या किसी दूसरे रीज़न की वजह से उनका जो एक्सटिंक्शन है वो हमें देखने को मिल रहा है। The IUCN, International Union for the Conservation of Nature, keeps a track of the conservation status of species around the world. They maintain a red list which evaluates the extinction list of thousands of species and subspecies. Every country of the world has to maintain a record of the population status of the endangered species of the country. This record is maintained in their red data book. Red list is the list of names of the endangered species of the country. तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन नेचर नो है, उन्होंने इन कंजर्वेशन को रिकॉर्ड किया है, इनको ट्रेस किया है और इन्होंने एक रेड लिस्ट जो है जारी की है ताकि हर एक कंट्री को ये लिस्ट भेजी गई है कि वो अपने एक्सटिंक्शन होने वाले इन जानवरों को बचा सकें।
Deforestation, the removal or cutting down of a forest and using the deforested land for commercial purpose is called deforestation. The reason behind deforestation are as follows: increased demand for land to build houses, factories, roads and dams to fulfill the needs of an ever-growing population. Increased requirement of wood for making paper and furniture is construction and as fuel. Overgrazing by cattle leads to depletion of forest cover and subsequently deforestation. Land is also cleared to be used for the cultivation of crops, agriculture, setting up industries and mining. Deforestation also occurs when trees are destroyed by natural causes such as forest fires and severe droughts. तो डिफॉरेस्टेशन जो है वो मेन रीज़न है, क्योंकि एनिमल्स कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, और उनके जो जंगल्स होते हैं वहाँ से पेड़ वगैरह अगर आप काट देंगे तो उनका घर जो है उजड़ जाएगा, फिर उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये मेन रीज़न है इनके एक्सटेंशन का। साथ ही साथ लैंड की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए फैक्ट्रीज वगैरह बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए इनको पेड़ काटने पड़ते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ वुड बढ़ गई है, जिसकी वजह से इन पेड़ों की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है और उन्हें काटा जाता है और उनसे पेपर्स वगैरह, फर्नीचर वगैरह और फ्यूल वगैरह जो है बनाए जाते हैं। Fact bites: illegal hunting and capturing of animals is called poaching. About 15 billion trees are lost each year due to deforestation, forest management and change in land use. तो इलीगल हंटिंग की वजह से बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं और अबाउट 15 बिलियन ट्रीज जो हैं वो हर साल काटे जाते हैं। Consequences of deforestation: deforestation has adverse effects on biodiversity and needs to be addressed immediately. Some of the adverse effects are as follows: pollution: increase in the level of pollution in the environment results due to decrease in the number of plants and trees on the earth. Climatic changes: the climate of a region changes due to deforestation. It increases pollution level and decrease rainfall. Global warming: due to accumulation of carbon dioxide, the atmosphere retains the heat of the sun. This results in higher temperature and causes global warming. Reducing water table: in the absence of tree cover, rainwater cannot infiltrate into the ground to charge the aquifer. It leads to the lowering of the groundwater level in the absence of replenishment. Imbalance in atmospheric gases: the felling of trees causes an imbalance in the level of gases in the atmosphere. Trees take in carbon dioxide and give out oxygen during photosynthesis. When trees are cut, the carbon dioxide contained in the atmosphere increases, causing global warming. Soil erosion: less trees result in more soil erosion as the roots of trees bind the soil and prevent it from being blown away or washed away by wind and water. It leads to desertification or formation of deserts, habitat and vegetation loss. Cutting down of trees on a large scale destroys the natural habitat of plants, animals and microorganisms. This distributes the ecological balance in nature. Several food chains and food webs get affected due to this imbalance. Natural calamities: deforestation increases the chance of natural calamities such as floods, droughts and famines. Loss of water holding capacity: the loss of trees and their root system leads to a decrease in the water holding capacity of soil particles. This causes a reduction in the seepage of water into the soil and hence the depletion in groundwater levels. Also, the excessive amounts of water on land causes floods which affect the fertility of soil. तो ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है क्योंकि ट्रीज़ जो है कट हो रहे हैं, जो कि ऑक्सीजन हमें देते थे और कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेते हैं। लेकिन अगर ट्रीज़ ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन हमें कौन देगा? तो इसमें एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। क्लाइमेटिक चेंज जो है वो हमें देखने को मिलता है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। ग्लोबल वार्मिंग जो है ये बढ़ रही है, ठीक है। वाटर टेबल जो है ये रिड्यूस होता जा रहा है और सॉइल इरोजन जो है ये भी बढ़ रहा है क्योंकि ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं वो रूट जो होती हैं वो सॉइल को पकड़ने का काम करती हैं और उसको ब्लोन अवे होने से बचाती हैं। Conservation of forest and wildlife. Conservation of biodiversity means the careful management of species of plants and animals and their preservation in order to protect them from extinction. We have learned how the loss of biodiversity affects the living and non-living
components of Earth. Thus, for the sustenance of life on Earth, we need to conserve the forest and wildlife. The preservation and careful management of plant and animal species is called conservation. Conservation of flora and fauna can be done by adapting various strategies. Let us discuss some of them. तो कंजर्वेशन जो है बायोडाइवर्सिटी, इसका मतलब होता है कि आप अपने एरिया के प्लांट्स एंड स्पीसीज को, एनिमल्स को आप क्या करते हो, बचाते हो, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो. Protected areas, the government of India has created protected areas under the Wildlife Protection Act 1972 to protect the flora and fauna and their habitats. The protected areas include national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserves. National parks are areas reserved for wildlife where they can move, feed and breed freely. Flora and fauna and landscape are together preserved in a national park. Grazing, poaching, hunting, forestry and cultivation are banned here. These national parks provide tourists and different kinds of safaris such as jeep safari and elephant safari to take tours. Within the parks, India is home to several well-known large mammals including the Asian elephants, Bengal tiger, Asiatic lion, leopards and Indian rhinoceros. These large mammals are important for wildlife tourism in India. There are more than 100 national parks in our country. तो नेशनल पार्क जो है खोले गए हैं ताकि इन एनिमल्स को बचाया जा सके, क्योंकि नॉर्मल फॉरेस्ट में जो हंटर्स होते हैं वो चुपके से जाकर रात को इनकी हंटिंग वगैरह करते हैं, लेकिन नेशनल पार्क में आपके जो वाइल्ड लाइफ होते हैं वो एक बाउंड्री के अंदर सेफ होते हैं. इनको फीड किया जाता है, ये इजीली वहाँ पे मूव करते हैं और इनको सारी व्यवस्था वगैरह दी जाती है. National Park location and fauna. Kahana National Park, Madhya Pradesh. Tiger, leopard, wild dog, wild cat, fox, jackal, swamp deer, spotted deer, sambar, the four-horned deer, black gaur. Jim Corbett National Park, Uttarakhand. Tiger, leopard, sambar deer, cheetal, sloth, Himalayan black bears, Indian grey mongoose, langurs, rhesus monkeys. Ranthambore National Park, Rajasthan. Tiger, leopard, nilgai, wild boar, sambar, hyena, sloth bear, southern plains, grey langur, rhesus macaque, cheetal. Bandhavgarh National Park, Madhya Pradesh. Tiger, gaur, sambar, barking deers, nilgai, Indian wolf, striped hyena, spotted deer. Gir National Park, Gujarat. Asiatic lions, Indian leopard, Indian cobra, striped hyena, golden jackal, Indian mongoose, Indian palm civet, desert cat, rusty spotted cat. Kaziranga National Park, Assam. Greater one-horned rhinoceros, wild Asiatic water buffalo, eastern swamp deer, elephant gaur, sambar, Indian munjat kak, wild boar, hog, deer, Indian tiger, leopard, Indian grey mongoose, putty-colored flying squirrel. Bandipur National Park, Karnataka. Tiger, Indian elephant gaur, sloth bear, mugger, Indian rock python, four-horned antelope, jackal, dhole, cheetal, Indian giant squirrel. Sundarban National Park, West Bengal. Bengal tiger, leopard, macaque, wild boar, Indian grey mongoose, saltwater crocodile, olive ridley turtle, Ganges, river dolphin, hawkbill turtle, mangrove horseshoe crab. Parihar National Park, Kerala. Tiger, elephant, white tiger gaur, sambar, Indian giant squirrel, Travancore flying squirrel, sloth bear, lion-tailed macaque, Salim Ali fruit bat, striped-necked mongoose. Koledio Ghana National Park, also called Bharatpur Bird Sanctuary, Rajasthan. Bird migratory, waterfowl and Siberian crane, warblers, warblers, bee-eaters, bulbuls, buntings, chats, partridges, quails, other animals, nilgai, feral cattle, cheetal, sambar, wild boar, Indian porcupine. Now, fact bites. The government of India had launched Project Tiger in 1973 to promote a conservation of the tiger. Project Tiger has been the largest species conservation initiative of its kind in the world. तो आपने रिसेंटली सुना होगा कि जो टाइगर्स थे वो विलुप्त होने की कगार पे थे क्योंकि उनकी संख्या बिल्कुल कम रह गई थी. तो गवर्नमेंट ने एक प्लान जो है लॉन्च किया था जिसका नाम था प्रोटेक्ट टाइगर. Now, activity 2, take a Indian political map, mark the names of national park state-wise on the map, paste it in your notebook. जितने भी ऊपर आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ा है, जिस भी स्टेट में ये हैं, आपको उन स्टेट्स को पॉलिटिकल मैप लेना है इंडिया का, उसमें मार्क करना है.
Now, wildlife sanctuary. Wildlife sanctuaries are the areas reserved exclusively for the protection of animals. Killing of animals, poaching or capturing of animals is strictly prohibited here. Here, wild animals are protected in their own natural habitat. Animals are not as comfortable in a zoo as they are in a sanctuary. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो इसलिए क्रिएट करी है ताकि इन एनिमल्स की जो पोचिंग है, हंटिंग है, उनको बचाया जा सके. Fact bites some wildlife sanctuaries in India. Sultanpur Bird Sanctuary, Haryana. Gir Wildlife Sanctuary, Gujarat. Mundumalai Sanctuary, Tamil Nadu. Dachigam Sanctuary, Srinagar. Perihar Sanctuary, Kerala. Kaziranga Sanctuary, Assam. तो ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इंडिया की जो अलग अलग स्टेट में हैं. Biosphere Reserve. A biosphere reserve is a large area consisting of terrestrial or coastal ecosystems that ensure the conservation of plant and animal resources. These also safeguard the living condition of tribal groups living in that area. A biosphere reserve may contain national parks, geological parks, and sanctuaries in it. 9 Indian biosphere reserves are part of the World Network Biosphere Reserves based on the UNESCO's Man and the Biosphere Map. Programs list. Nilgiri Biosphere Reserve was the first biosphere reserve established in India in 1986. तो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जान लेते हैं. ये ऐसा रिजर्व होता है जहाँ पे आपके टेरेस्ट्रियल और कोस्टल इकोसिस्टम को रखा जाता है. और कोस्टल इकोसिस्टम जो है ये इंश्योर करता है कि यहाँ पे आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखा जाए. तो ये एक सेफगार्ड की तरह काम करता है. ये उनको पूरी लिविंग कंडीशंस देता है ताकि वो उस जगह पे रह सके. बायो रिजर्व स्टेट्स की फौना. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका. नीलगिरी ताहर, लायन टेल्ड मकाक, पंचमाहिर बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश. जायंट स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल. गुल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु. सी काउ. ग्रेट निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल. अच्छा नकामर अमार्क कर्नाटक. बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश. फोर हॉर्न्ड एंटेलोप, सरस क्रेन, एशियन व्हाइट बैक वल्चर. सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बंगाल, बंगाल टाइगर. सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा, गौर बंगाल टाइगर एलिफेंट. नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड, हिमालयन मस्क डियर, हिमालयन ताहर. तो ये सारे आपके बायोस्फीयर हैं जो अलग अलग स्टेट में लोकेटेड हैं. Fact bites. Jim Corbett National Park is the first national park of the country. It was established in 1936 as Haley National Park to protect the endangered Bengal tigers. It is located in Nainital district of Uttarakhand and was named after Jim Corbett, a naturalist. तो पहला जो पार्क जो खुला गया था नेशनल पार्क वो जिम कॉर्बेट है जो कि नैनीताल उत्तराखंड में लोकेटेड है. Migration. It is defined as the mass movement of birds and animals from one place to another within the country or to a different country in search of suitable living conditions. The species that move from one habitat to another during different times of year due to seasonal variation and the availability of food and water are called migratory species. अब कुछ birds की species जो होती हैं वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं. इसमें एनिमल भी आपके शामिल है. अब क्या होता है, जो ठंडे इलाकों में जो रहने वाले एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, जब उनके इलाके में बर्फ़ पड़ती है तो वो गर्म इलाकों की तरफ चले जाते हैं लेकिन वापस भी आ जाते हैं. There are various migratory birds that cover long distance to reach different destinations in search of warm food and safe place to breed or reproduce at different times of the year. Siberian cranes migrate from Siberia to India in groups during winter to avoid extreme cold weather in Siberia. Some common migratory birds found in India are great cormorants, bar-headed goose, Arctic terns, etc. Great flamingo is an example of a migratory bird found in Thol Bird Sanctuary in Gujarat during the entire winter season. It migrates to India from the northern region of Asia during winters. तो अलग अलग जगह से जो birds हैं माइग्रेट होकर के इंडिया आते हैं. जैसे साइबेरियन क्रेन जो है वो इंडिया आते हैं साइबेरिया से, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ती है, ठंड ज़्यादा होती है, तो वो इंडिया आ जाते हैं क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में गर्मी होती है. तो यहाँ पे आते हैं, कुछ टाइम रहते हैं और फिर वापस चले जाते हैं.
Now, reforestation and recycling of paper. Reforestation is the process of restocking of the destroyed forest by planting new saplings. This is done for the purpose of generating the stock of trees species that existed in that forest. This process can be done naturally or artificially. Van Mahotsav is one such effort conducted across during India. During the rainy season, our environment is adversely affected by the destruction of a forest. Thus, we need to conserve a forest. The Forest Conservation Act aims at the preservation and conservation of natural resources. तो अफॉरेस्टेशन एक तरीका होता है जिसको आप अपने जंगलों को रिफॉरेस्ट करने के लिए लगाते हैं, मतलब इसमें न्यू सैपलिंग्स जो हैं उगाए जाते हैं, ठीक है. Paper is made from the pulp of trees. Do you know that it takes 70 full-grown trees to make tons of papers? You can imagine how many lakhs of trees must be felled every year to make paper. Thus, we must use paper with utmost care. So, it is important to plant trees for obtaining paper as well as other products. The paper must also be saved, reused and recycled. This helps not only in the saving trees but also saving water and energy used in the production of paper. This also reduces the use of harmful chemicals. Paper can be recycled 5 to 7 times. Recycling of paper helps to save trees and the energy and water required to manufacture it. It also reduces the amount of harmful chemicals used in making paper. We must thus avoid the wastage of paper, use it judiciously and send it for recycling. तो बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है टन्स ऑफ पेपर बनाने के लिए, ठीक है. तो आप अगर पेपर यूं ही वेस्ट करते जाएंगे तो इसमें क्या होगा, ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा कटते जाएंगे और एक दिन ट्री जो है बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे. तो हमें पेपर को रिसाइकल करना चाहिए 5 to 7 टाइम. इससे क्या होगा, आपके ट्रीज़ जो हैं वो सेव हो जाएंगे और एनर्जी एंड वाटर जो है वो भी बचेगा जो इसको बनाने में लगा जाता है. Read at a glance, biodiversity is useful for human being as well as to the environment as it helps in maintaining ecological balance. Deforestation can be caused due to human interference and natural causes. Red Data Book contains a record of endangered plant and animal species. The major cause of the loss of biodiversity is deforestation. Desertification takes place due to the deforestation or overgrazing of green cover. Wildlife in India is diverse because of a diversity of habitats and ecosystems. Deforestation causes global warming, droughts, floods, soil erosion, desertification, lowering of groundwater levels and destruction of habitats of many living organisms. Species are divided into endangered species, vulnerable species and rare species as per an organization called International Union of Conservation of Natural Resources. Endangered species are on the verge of extinction as they are decreasing in number due to killing and reduction of habitat. Protected areas include national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserve. Human activities such as killing, capturing or poaching of animals are totally banned. Reforestation can be done naturally or artificially. Paper must be saved, reused and recycled in an effort to save trees. Key terms to know: biodiversity, a variety of living organisms existing on earth. Habitat, a dwelling of an organism that is suitable for that organism and helps the organism to survive and reproduce. Deforestation, removal or cutting of forest and using the deforested land for other purposes. Desertification, the purpose of conversion of a fertile land into a desert. Flora, different plants growing in a particular area. Fauna, animals found in a particular area. Wildlife, all organisms, trees and plants that inhabit their regional natural habitats such as forest, hill, mountains, plains, deserts, pastoral lands, ponds, lakes, rivers, oceans, etc. and that are away from human interference. Reforestation means the process of restocking of the destroyed forest by planting new tree saplings. Ecosystem, all the living organism along with the non-living components of an area. Biosphere, the zone of earth which supports the life or where living organism exist. Endemic species, species of plant and animal which are found exclusively in a particular geographical area. Extinction, the species of organism that have completely disappeared from the earth. Natural extinction, extinction due to change in the environment condition upon the earth and the organism is not able to cope or match it.
unnatural extinction due to the various activities of man and change done by him. It gets resulted in elimination and destruction of natural habitats of wild animals. Conservation, the wise and judicious use of natural resources. Protected areas, the areas dedicated to the protection and maintenance of biodiversity along with its cultural resources. National park, these are the areas that are very large, diverse and protect the whole ecosystem comprising of landscape, flora, fauna, historical objects. Wildlife sanctuary, it is the natural area where the wildlife is protected and preserved under government control and jurisdiction. Biosphere reserve, a large multi-purpose protected area for the conservation of wildlife along with the safeguarding needs of tribal groups. Migration, the mass movement of birds and animals from one place to another within the country or to a different country in search of suitable living conditions. So children, इस चैप्टर में हमने ऐसे स्पीसीज के बारे में पढ़ा जो एक्सटेंड हो चुकी है और ऐसी स्पीसीज जो एक्सटेंड होने वाली है, तो हमें उन्हें बचाने के प्रयास करने चाहिए, उन्हें हमें कंजर्व करके रखना चाहिए। गवर्नमेंट तो कुछ कदम उठा ही रही है, लेकिन साथ साथ हमें भी लोगों को अवेयर करना चाहिए, खुद भी अवेयर होना चाहिए ताकि हम उन स्पीसीज़ को, चाहे प्लांट्स की है, एनिमल्स की हैं, उनको बचाने में गवर्नमेंट की हेल्प कर सकें। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.